So now it is your very first time you are talking with me in English, okay? So first you have to tell me, बोले ना, इसका क्या मतलब होगा have to का? हाँ, तो मतलब कि क्या करना है ना, you have to tell you मतलब तुम्हें मुझे बताना है ना? Do you understand my words? इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, तो हम जैसे बोले कि तुम हाँ और ना में जवाब मत देना। कैसे जवाब देगी? पूरा फुल फ्लेज सेंटेंस बना के कि यस, इफ आई आस्क यू डू यू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स, सो यू हैव टू टेल मी यस आई अंडरस्टैंड, मतलब सेंटेंस बना के, ठीक है? एंड नाउ वी विल स्टार्ट विथ योर इंट्रोडक्शन, अ ब्रीफ, अ स्मॉल इंट्रोडक्शन. नाउ प्लीज टेल मी. First of all, my name is Divya Kumari. I live at Ladania and in class 10th. I am a student of rural English classes and my father name is Mr. Ganesh Prasad. He is a businessman and my mother name is Mrs. Baby Gupta. She is a simple housewife. Very good. Okay, and can you guys please stop talking? Ganesh, do not talk, right? We're just talking here, so it makes some noise, so don't do that. Okay, all right. So okay, it was your introduction and now I'm going to ask you some questions. I will ask you some questions, है ना? Going to और will को एक जगह पे हम use कर सकते हैं, जैसे हम बताते आ रहे हैं. चलो, so first you will tell me about your favorite subject. Do you have any favorite subject? Yeah. Yes. My favorite subject is English and Sanskrit. Sanskrit. Yeah. You know Sanskrit? Yeah. Oh, it is so hard. Make full sentence. Just say I know Sanskrit. I know Sanskrit. Sanskrit is not hard. Not hard. Wow. For me, it is very hard because when I used to study Sanskrit, you can ask all of them. Sanskrit सबके लिए hard होता है. And you are studying. Congratulations for that and best of luck because you are learning Sanskrit and this is really hard. Okay, so can you do translation in Sanskrit? Example. Okay, I will ask you some Hindi वाक्य and you will have to अनुवाद, like translate. So can you do that? I can do this. Okay. Tell me. आसान सा. Okay, हाँ आसान सा. We will start with very easy. So मैं खाता हूँ. मैं क्या होगा? हम खा देते हैं. Okay, and क्या? मैं खाता हूँ. अबे हो English नहीं. Not in English. Sanskrit है ना? So can you tell me any शब्द रूप और? हाँ. Okay. Yeah. Which one do you remember? कौन सा याद है? तद सब. तद सब. स तो ते तम तो तान तेन तब हम ते. लिटिल लाउड, थोड़ा जोर से बोलो. हाँ. सह मतलब क्या होता है पहले? वाह. सह मतलब? वाह. हाँ. स तो ते तम तो तान तेन तब हम ते तस्मै तब हम ते बे तस्मा तब हम ते बे तसे ते तसाम तस्मिन ते तेसु. मुझे तो ये तस्मीन ते तेसु हम लोग याद करते थे पहले बचपन में. तस्मीन ते तेसु याद करते थे बचपन में. बचपन में कहाँ, 10th में? वो बचपन थोड़े होता है. ऑलराइट. बालक शब्द? या. बालकः बालको बालकः बालकम बालको बालक. हमको नहीं याद है, तुम बताएगी. ठीक है? ठीक है. स्टॉप. यस. शट. बालका बालको बालका बालकम बालको बालकम बालकेन बालके हम स्लो बालक. स्लो. बालका बालको बालका बालकम बालको बालकम बालकेन बालके हम बालका 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 बालके बे बालका बालके बालके बे बालका से बालके बालका न बालके 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 सुहे बालक है बालका बालका. गुड. हे बालक. हे बालक. हे बालक, आप बैठ जाइए बालक. आप बैठ जाइए बालक. Okay. All right. So it was so good and I don't know Sanskrit. Okay. I know English. I know little bit of maths. All right. Okay. So tell me, your favorite subject is English and Sanskrit. So what about maths? You do not like maths? No, I do not like math. It is so like करना पड़ता है. It is so much complicated. Anyway, so can you tell? Do you have any best friend? No, I have not best friend. You have no best friend? No. Oh, please boys, shut up. So you have no best friend? No. That is so bad. I mean, you must have a best friend because best friend plays a very important role in our life. So okay, tell me, is there anyone जिसको तुम अपना best friend बनाना चाहती है? In your classroom? No. No one? Okay, so can you tell me about your mother? I've heard you like your mother more, right? Yeah. Okay, so tell me about your mother. With name, we will start with name. Okay. My mother's name is Mrs. Baby Gupta. She is a simple housewife. My mother loves me and I love my mother. इसके बारे में क्या कह सकते हैं? Anything that you want to tell us about your mother? She does a lot of work in home and these all things. All right. So one more thing about Aman.
Aman. My brother name is Aman Kumar Shah. ही इज यंगर और व्हाट एल्डर बड़ा है छोटा है? बड़ा है हमसे. तो तुमसे बड़ा है? हाँ. ओके अच्छा हाँ बड़ा है ना. ऑलराइट हमको लगा कि छोटा है तुमसे. ऑलराइट यस टेल मी. My brother name is brother name is Aman Kumar Shah. ओके He is Shah Shah. and Gupta is same. Same है. शाह और गुप्ता सेम है. ओके आई डोंट कास्ट नो. में आता है. ओके टेल नहीं बोल सकते हम. अबाउट योर ब्रदर आई मीन वो कैसा है? ही इज वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट एंड कितना तक पढ़ा है वो चीज़ें? He is a very intelligent and my brother very loves me and I love my brother, but my brother's my brother's very not beat me. Oh he beats you. Yeah. I have also heard your brother is kind of gymnastic person. He do exercises and gym. Yeah. So can you tell me something about him? No. No. All right. So another question. We are talking so well. Okay. Now, so why do you like English? Tell me. Can you tell me why do you like English? You told me English is your favorite subject. So क्यों? Why? Because English is not hard word. हाँ, not hard language. Language. Okay, good. And I. तुम ऐसे बोल रहे हैं ना English is not hard language. तो लोग बोल रहे हैं यार hard नहीं है. अच्छा. Okay. And I love English. That's good. And ऐसा बोलेंगे जब इंग्लिश बोलते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है. ऐसा कुछ बोलेंगे है ना इंग्लिश के बारे में? When I speak English, so I am very good. I feel good. I feel good. People also thinks कितना तेज है लड़की है ना ऐसा कुछ. Yes. Thank you. That's all. Okay, it was really good. Now you can say thank you.